माय यूट्यूब चैनल केमती अच्छे सब आशा बुझे आपण मैंने बहुत भल थे मुझे भल अच्छी चलते लेट नक आज भिडियो स्टार्ट करवा चलते देखो आज पढ़ा आम फंडामेंटल राइट्स आर इनकरप्टेड फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्सटा आम आर्टिकल 12 रू 35 पर्यंत जाऊँगी इन द थर्ड चैप्टर ऑफ पार्ट 3 आ फंडामेंटल राइट्सटा आमर पार्ट 3 रे रोचे एंड ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस रिगार्ड The existence of democracy can't be imagined without fundamental rights in India because rights are the pillars of democracy. तापर देखो पार्ट 3 then of the constitution is rightly described as the Magna Carta of India. Magna Carta टा हमर constitution रे part 3 रे अछि. It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than it found in the constitution of any other country in the world, including the USA. यूएस माने आम जो फंडामेंटल राइट्सटा आमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रू आम बोरो करथिले आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे माने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रू देखिकी आसीथिला तापर देखो फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी द प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री and protect the liberties and freedom of the people against the invasion by the state. आमर फंडामेंटल राइट्स इभाल्यूएसन सब कौन कौन जाऊँगी गोटे मैग्ना कार्टा 12-15 years एंड पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 बिल ऑफ राइट्स 1688. फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इक्वल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल. फंडामेंटल राइट्स कहले आम माने बुझुंदी कि सबू हूँ सम्मान माने समस्त को सम्मान अधिकार मिलवा दरकार आ फंडामेंटल राइट्स माने जस्टिसेबल समस्त को सम्मान भाव में न्याय मिलवा दरकार. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट qualified. This right can be suspended during national emergency. यही राइटा केवल नेशनल इमरजेंसी लगे ही सस्पेंड हो पार आउ कौन हो पारनि एक्सेप्ट द राइट ग्यारंटी बाय आर्टिकल 2021. आउ यहाँ कौ आर्टिकल माने लिखाई आर्टिकल 20 and 21. Some of them available only to the citizen while other are available to all person whether citizens foreign or legal person like corporation of company. They are defended and guaranteed by the Supreme Court. All of them are available against the abilitary action of the state. The constitution provides 6 fundamental rights. आमर फंडामेंटल राइट्सटा कनसीडर करे 6 फंडामेंटल राइट्स बा 6टा फंडामेंटल राइट्स को सेगुड़ा कौन कौन ना राइट टू इक्वालिटी कनसिस्ट करे आर्टिकल 14 to 18 एंड राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 and educational rights article 29 to 30 right to constitutional remedies article 32. द मोस्ट इम्पोर्टाट समस्त नोट डाउन करदेव आउ ये 6टा फंडामेंटल राइट्स को सब बड़े मुहर रखिब. हाउ एवर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. It is made a legal right under Article 300A in Part XII of the Constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. आमर आगुरी कौन हो माने जितेबले कॉन्स्टिट्यूशन रे माने आमर संविधान रे कॉन्स्टिट्यूशन धारा नथिला ता पूर्वरु आमर आउ गोटे माने जो फंडामेंटल राइट्स थिला एटा होची राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि एबे माने रिसेंटली माने 1978 रे ताको डिलीटेड करा जायगी 6टा माने 6 फंडामेंटल राइट्स ऐड हेची. तो करेंटली नाउ consist of 6 fundamental rights in our Indian constitution.
तापर देखो ये जो कन्स्टिट्यूशन गुड़ा सब जो 6 फंडामेंटल पढ़ी ताको सब माने एलाबोरेटली डिस्क्राइब करा पड़ो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी आम जाऊँ कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शाल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदिन टेरिटोरी ऑफ इंडिया राइट टू इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ आउ आम टेरिटोरी आउ माने लॉ को सब प्रोटेक्शन करिवो इंडिया रे आउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन व्हाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन of laws has been taken from the American Constitution ए जो आमर कॉन्सेप्टा मु प्रीवियस माने माने प्रीवियस वर्ड रे कहली तो समस्ते शुणिथिबो कि ए जो आमर माने ए कौन एटा ये पार्टा फंडामेंटल राइट्स रो ये पार्टा आमर पार्ट 3 आ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो अडॉप्ट करा होईची तो द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉज एंड द लैंड एडमिनिस्टर बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स Now the rule of law concept of equality before law is an element of the concept of rule of law propounded by एफिडेसी and British jurist ए rule of law आउ आमर आसला बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो कॉन्सेप्टा आमर कोठू आसला ब्रिटिश जूरिस्ट जी जड़े एफिडेसी सी propoundर सी आमर ब्रिटिश रो सी कॉन्सेप्टा बोरो करथिले आसले आमर प्रोहिबिशन पर नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स तो ये गुड़ा टिके टिके आपन रीडिंग मार देबे एटा थ्योरी टाइप रो अछि बुझिबारे सेमती किछि नाही पढ़िले आराम से बुझि जिवे तापर देखंतु नेक्स्ट आसला आर्टिकल 19 to 22 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा आर्टिकल 19 रे होची कोन ना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स तापर देन थर्ड इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी राइट टू फ्रीडम माने गोटे व्यक्ति को बा गोटे आज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज ए ह्यूमन बीइंग समस्त गोटे निजर माने सेतिकी फ्रीडम थिबा दरकार किछि माने तांगा निज एक्सप्रेशन निजर किछि कथा से एक्सप्रेस करि परथिबे दरकार आ एटा कोन ना पीसफुली भाबरे विदाउट किछि भी हार्म आसीबनी किछि भी माने कंट्रोवर्सी आसीबनी विदाउट माने विदाउट कंट्रोवर्सी से निज एक्सप्रेशन टाको शो कर पारे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड से एसोसिएशन निजर सोसाइटी रे माने से कोऑपरेट करथिबे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया और राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया तापर लास्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आम निजर लाइफ आ पर्सनल माने निजर निज अधिकार आ निजर लाइफ ऊपर आम प्रोटेक्शन माने राइट टू फ्रीडम रे लिखा अछि कि निज लाइफ और निजर लिबर्टी ऊपर प्रोटेक्शन रहिबा दरकार राइट टू एजुकेशन समस्त पाठ पढ़िबार बा शिक्षा ग्रहण करिवार अधिकार अछि प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केस कोनोसी गोटे किछि भी केस हो कि तुम किछि जदी माने हैरान करूचंती बा किछि भी डिटेक्ट तुम करिकी किछि भी तुम प्रॉब्लम सफर करछो देन तुम से माने एइथिरे लेखा अछि कि तुम निजर प्रोटेक्शन करि परिबो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर क्या कौन से ह्यूमन बीइंग को तुम काम करने लेबर माने जो फोर्स करि परिबोनी तापर देन आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 14 इयर्स एंड 14 वर्ष रु कम वयस्क छुआ मानक बा पिला मानक माने बाध्य करि परिबोनी कि माने जो दादन खटंती बा श्रमिक जो खटंती बा अन्य घरे जाकि जो काम करंती कौन से चाइल्ड को एटा माने एटा बहुत हैम्पर करिवो कौन से चाइल्ड को माने फोर्सफुली करि परिबो नै एटा कोथरे लिखा छै आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 24 रे अछि तापरे कौन लिखाला द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन आउ एटा
ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट केबे होता 1986 मसीह होता 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 14 इयर्स एंड 14 वर्ष रु कम वयस्क छुआ मानू पिला माने बाध्य करें कि माने जो दादन खटती श्रमिक जो खटती अन्य घर जा जो काम करती कौन चाइल्ड को यहाँ माने यहाँ बहुत हैम्पर कर कौन चाइल्ड को माने फोर्सफुली करें ना यहाँ कौन लिखाई आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 24 रे अच्छी तापरे कौन लिखा द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन आउ ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट केबे होता 1986 मसीह होता आउ मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट कि गोटे चाइल्ड जो भी आपण मैंने देखिए कि भी कौन गोटे छोट पिला को चाइल्ड को जदि लेबर भाव में खटाऊे कि किसी भी माने फोर्सफुली द्वारा काम करा तो यही आर्टिकल द्वारा लागू हम आर्टिकल 23 रु 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 रु 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 रु 28 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड propagation of religion article 25 says that all persons are equally entitled freedoms are conscience right freely for preference practice and propagate religion आर्टिकल 25 रे कहगला कि समस्तଙ୍କର ନିଜର किछिटा ନିଜର प्रोफेशन अच्छी ନିଜର किछि प्रैक्टिस अच्छी बा ନିଜର रिलीजन अच्छी तो ताकू ता ऊपर के हैम्पर करि परिबेनी कि कोनोसी जिंस को माने जो फोर्सफुली प्रोपागेट करा जीवो नाही समस्तଙ୍କର ନିଜର राइट अच्छी फ्रीडम अच्छी तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहगला कि सब माने जेमति देखंतु धर मुस्लिम धर्म आम हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन एगुड़ा तो आमर से माने राइट्स नहीं आम जाकि गोटे मुस्लिम धर्मर माने मुस्लिम जहाँ भी रिलीजन थी आम रिलीजन को हैम्पर करवा रिलीजन को माने रेस्पेक्ट न कला भाया किसी काम करवा से अधिकार आमर ना तो से जिनसटा कौ आर्टिकल कहुई आर्टिकल 25 रु 28 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस जिनसटा कहली केमी आम रिलीजियस माने मेंटेन करवा केमती से अदर रिलीजन को रेस्पेक्ट दबा तो से जिनस ही सब ये कहुई आपण मैंने रीडिंग करदे तापर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 रु 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखो कहले कौन माइनॉरिटीज पीपल माने जो मैंने रही माने जो मैंने स्लम एरिया रू बिलोंग करमर माने कैटेगोरी अच्छी ना जो एससी एसटी आमर एससी बीसी ओबीसी तो ये जो कैटेगोरी सब रहिले तो से समस्त सबू कैटेगोरी को केमती जो प्रोटेक्शन दिज्व से इंटरेस्ट रहा दरकार आ माइनॉरिटी मानू केमी एजुकेशनल माने कौन करा जाए आमर जो माइनॉरिटीज पीपल सब जो मैंने रहिले जो मैंने धर माने स्लम एरिया रू बिलोंग कर किसी माने लोअर कास्ट तो से कौन करा होची ना कि से माने गोटे गोटे क्लास रे डिवाइड कर दौन कि से एजुकेशनल माने एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे माने अधिक जो जमती कौन इम्पोर्टान्स दि जाऊनी से एते फैसिलिटी दि जाऊनी तो से जिनसटा कहगला कि माने ये सब जिनस फैसिलिटी दबा दरकार आ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो कि एडमिनिस्ट्रेशन रे हो बा से प्रोटेक्शन हो सब जिनस इंटरेस्ट आनिया दरकार ऑल माइनॉरिटीज शाल हैव राइट एस्टाब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस से सब माइनॉरिटीज पीपल माने निज चॉइस अनुसार निज इच्छा अनुसार से माने कौन करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चॉइस करेंगे कौन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी चूज करेंगे निज स्व इच्छा से अधिकारटा निहाती मिलवा दरकार माइनॉरिटीज पीपल मानक से जिनसटा कौ आर्टिकल कहगला आर्टिकल 29 रु 30 लास्ट वन देखो आमर 6 फंडामेंटल राइट्स लास्ट राइट्स आर्टिकल 32 रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड by this part in their application to force etc restriction on rights confirmed by this part while material law is in force in any area तापर जो रीड्स आमर अच्छी तो रीड्स हूँ आमर केते प्रकार ना टोटाल हूँ आमर 5 प्रकार तो 5 प्रकार रीड्स गुड़ा कौन ना हेबियस कॉर्पस तापर आमर मैंडामस प्रोहिबिशन सर्टिओरारी तापर क्वा वारेंटो
तापर देखो फास्ट रीड्स कौन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट ऑफ इश्यू द रीड्स हेबियस कॉर्पस mandamus prohibition certiorari and quo warranto. These rights are borrowed from English law where there are no as pre-propagative रीड्स यही जो आमर रीड्सटा कौटू आसला कौटू बोरो कराइला ना इंग्लिश लॉ कोटा कि आमर प्रोपागेटिव प्री प्रोपागेटिव रीड्स रु बोरो करा जाइतिला आउ इंग्लिश लॉ रु ही आसतिला तापरे then is the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights, whereas High Court can issue writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. So writs against the person or government throughout the territory of India, whereas a High Court can issue writs against a person, its territory, jurisdiction only or outside its territory. तापर हेबियस कॉर्पस रे कौन कहगला ना इट इज ए लैटिन टर्म व्हिच लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ ए जे टर्मटा आमर गोटे लैटिन वर्ड आउ या माने हो टू हैव द बॉडी ऑफ इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट ऑफ पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन कोर्ट कही जदि भी किसी कोर्ट तुम इश्यू करुच तो कोर्ट माने आउ गोटे अन्य लोक जाकि डिटेन करना तो से जिनसा हेबियस कॉर्पस रे कहगला टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट वाज सेट टू द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल जदि भी कौन से अन्य लोक जाकि से जिनस डिटेन कला कि इनवल्व है ताहले एटा गोटे माने आमर कोर्ट रे एटा इलीगल भाव में धरा जीवो तो ताकू तार इलीगल हम माने तार पनिशमेंट ताकू मिलिबो तो सेही जिनसटा आमर कहगला कोथिरे एटा आम रहा कौन हेबियस कॉर्पस तापर देखो मांडामस रे आसले आमर इट लिटरली मीन्स वी कमांड इट इज एन कमांड mandamus means it literally means we command it is a command issued by the court to a public official asking ऑफिशियली तुम जहाँ भी प्रोब्लेम हम तुम आसिक माने पचारि पार कमांड करा टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज that he was failed for refused to perform. It can also be issued against any public body, corporation and inferior court. The writ of mandamus cannot be issued against a private individual or body to enforce departmental instruction that does not possess statutory forces. Prohibition literally means to forbid. Prohibition means forbid. Mandamus means we command. एंड सेकेंड फास्ट आमर कौन थी ना कौन से हेबियस कॉर्पस जोटार माने हो टू हैव द बॉडी ऑफ तापर सेकेंड इज वी कमांड थर्ड इज टू फॉरबिड तापर सर्टियोररी इन द लिटरल सेंटेंस इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म इट इज इश्यूड by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to quash the order of the latter in case आउ सांग मैंने आज तो वीडियो मुझे ही सारी भावुँ आज जी वीडियो कर बहुत भल लगी वीडियोटी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें आउ जो मानक भी बहुत भल लगी शेयर करेंगे आउ जहाँ भी जब भी मोर किसी भूल भाल रही जाए तो मत सियोर जनइबे ठीक अच्छे मुझे रखुची टाटा।